बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं खातून पाकिस्तान गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन कराची में होने वाले प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस 2022 से सेकेंड ईयर इंग्लिश के पेपर को। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे तमाम तर 40 के 40 MCQs, उसका सोल्यूशन देंगे। जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है उसका सोल्यूशन देंगे जो कि सेक्शन सी का है। और अगरचे हम सेक्शन बी सॉल्व नहीं करेंगे लेकिन उसको डिस्कस जरूर करेंगे। तो प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो आर्ट्स वालों के लिए, साइंस वालों के लिए, कॉमर्स वालों के लिए, होम इकोनॉमिक्स के लिए, सबके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक बात और, इससे पहले कि मैं एमसीक्यू शुरू करें बताता चलूं कि जितने भी सेकेंड ईयर इंग्लिश के कॉलेजेस के और कोचिंग के पेपर्स मैंने सॉल्व किए हैं, सबका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप वहां से जाकर तमाम तो वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर चाहिए पेपर इस तरह से जो है रिपीट नहीं होगा कि आपके फाइनल एग्जामिनेशन में आपको कोई हेल्प आउट करे, लेकिन प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और गौर से सुनिएगा। Black Michael was killed by Colonel Sapp, Rudolf Rassendyll, Rupert Freds. Rudolf Rassendyll killed Degotet, Barsanin and Croston, Dr. Dechard Langram. In the novel The Prison of Zenda, Jacob's ladder was actually a ladder, pipe, tower, drawbridge. पॉज कर लें वीडियो को, अपने एमसीक्यूज को मार्क कर लें और उसके बाद वीडियो को रिज्यूम करके अपने आंसर्स चेक कर लें। ब्लैक माइकल वाज किल्ड बाय रुडोल्फ, नहीं, Rupert of Hanzo actually killed him. Rudolf Rassendyll killed Degotet, Barsarin and Dechard. In the novel The Prison of Zenda, Jacob's ladder was actually a pipe. होपफुली कि ये तीनों एमसीक्यूज आप नोट डाउन कर चुके होंगे। चलते हैं फर्दर एमसीक्यूज की तरफ। और अगर आप ये चाहते हैं कि सेकेंड ईयर के तमाम प्रो सेक्शन के जो चैप्टर्स हैं उनके तमाम तरह एमसीक्यूज अलोंग विद द पास पेपर्स आप देख सकें, सॉल्व कर सकें, तो उसका जो लिंक है वो आपकी स्क्रीन के टॉप राइट पे जो आई बटन डिस्प्ले हो रहा है इस वक्त, उस पर क्लिक करके वो देख सकते हैं। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक उसमें मौजूद है। The coronation ceremony took place on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Madame de Mabam betrayed Rupert, Black Michael, Alsberg, Rassendyll. The main villain of the prison of Zenda is Colonel Sapp, Fritz von Tallenheim, Duke Michael, Rupert. Rudolf Rassendyll belonged to France, Britannia, England, Germany. The next heir to the throne of Britannia was Rudolf Alsberg, Black Michael, Princess Flavia, Rudolf Rassendyll. Fritz von Tallenheim was the king's cousin, Flavia's cousin, Rassendyll's cousin, king's attendant. तो आप पॉज करके अपनी वीडियो को लिख लीजिए, अपने आंसर्स को, उसके बाद इसको रिज्यूम करके अपने आंसर्स चेक कर लें। The coronation ceremony took place on Wednesday. Madame de Mabam betrayed Black Michael. The main villain of the novel Prison of Zenda is Duke Michael. Rudolf Rassendyll belonged to England. The next heir to the throne of Britannia was Princess Flavia. Fritz von Tallenheim was king's attendant. ठीक है जी, ये कॉपी डाउन कर चुके होंगे यकीनी तौर पर। चलते हैं फर्दर एमसीक्यूज को डिस्कस करने के लिए। Rassendyll was aged 27, 28, 29, 30. In the summer house for his defense, Rassendyll used chair, sword, tea table, pistol. There was a close resemblance between Rassendyll and Fritz John, Rudolf Alsberg, Sapp. The capital city of Britannia, Zenda, Tyrol, Strelzow, Dresden. Old Town was for Princess Flavia, Duke Michael, Marshal, Alsberg. The castle of Zenda was owned by Rassendyll, Black Michael, Princess Flavia, Alsberg. अपनी वीडियो को पॉज कीजिए, अपने आंसर्स लिख लीजिए और उसके बाद फिर वीडियो को रिज्यूम करके अपने आंसर्स चेक कर लें। Here are the right answers. Rudolf Rassendyll was aged 29. In the summer house for his defense, Rassendyll used tea table. There was a close resemblance between Rassendyll and Rudolf Alsberg. The capital city of Britannia is Strelzow. Old Town was for Duke Michael. The castle of Zenda was owned by Black Michael.
चलते हैं फर्दर एमसीक्यूज की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप ये चाहते हैं कि द प्रिजन ऑफ जेंडा के तमाम तर एमसीक्यूज अलॉन्ग विद द पास्ट पेपर्स आप डील कर सकें, सुन सकें, प्रैक्टिस कर सकें, तो उसका जो लिंक है वो आपके स्क्रीन के टॉप राइट पे जो आई बटन अभी शो हो रहा है उसमें मौजूद है। उस प्लेलिस्ट का लिंक आप वहां से देख सकते हैं। Mubarak wrote a letter to Rassendyll on the order of Flavia Blackmichael Fritz Rupert. Sir Anthony Hopkins, besides being a novelist, was also a doctor, lawyer, journalist, professor. The narrative of the adventures of the prison of Zenda is told by Sap Flavia Ellsberg. Ellsberg is spelling galat hai, Rassendyll. The language of Britannia was Czech, Italian, French, German. Rudolf Rassendyll's play acting as a king continued for a period of 4 months, 3 months, 3 weeks, 5 weeks. पॉज करें वीडियो को, अपने आंसर्स लिखें और फिर वीडियो को रिज्यूम करके अपने आंसर्स चेक कर लें। Mubarak wrote a letter to Rassendyll on the order of Black Michael. Sir Anthony Hopkins, besides being a novelist, was also a lawyer. The narrative of the adventures of the prison of Zenda is told by Rassendyll. Obviously बात है narrator Rudolf Rassendyll इस पूरे नॉवल का। The language of Britannia was German. ऐसा हम इमेजिन करते हैं क्योंकि सेंट्रल यूरोप में है ये कंट्री। Rudolf Rassendyll's play acting as a king continued for a period of 3 months. होपफुली के नोट डाउन कर चुके हैं आप लोग। चलते हैं फर्दर एमसीक्यूज को देखते हैं। The author of the play 20 Minutes with Mrs. Cantab is Oscar Wilde, Frank Arthur, John Galsworthy, Albert Einstein. According to Bernard Russell, Europe was sunk in socialism, imperialism, barbarism, communism. Modern cosmopolitanism is based upon lust of power, strong economy, science and machinery. The haunt of James Serber during the panic was in a hotel, movie theater, church, shopping mall. Liaquat Ali Khan was assassinated in Karachi, Rawalpindi, Peshawar, Lahore. Act 3 of the Silver Box shows in the British legal system sincerity, validity, disparity and liability. पॉज कर लें वीडियो को और पॉज करने के बाद अपने आंसर्स को लिख लीजिए, उसके बाद वीडियो को रिज्यूम करके अपने आंसर्स को चेक कर लें। The author of the play 20 Minutes with Mrs. Cantab is, अब सुन लें सही आंसर। Frank Arthur. According to Baron Russell, Europe was sunk in barbarism. Modern cosmopolitanism is based upon science and machinery. The aunt of James Serber during the panic was in a movie theater. She was Edith Taylor. Liaquat Ali Khan was assassinated in Rawalpindi. Act 3 of the Silver Box shows the in the British legal system disparity. Hopefully कि आप कर चुके होंगे इसको नोट डाउन, और चलते हैं हम फिर आगे एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं 27 and onwards. According to Albert Einstein, the sound sense of nations has been corrupted by electronic media, political parties, school, and the press. The doctor went towards the miller's house on foot, in a motor car, in a horse carriage, on a motorbike. Catherine suggested to her father that he must land in England, London, Canada, India. The sun and the other stars we see in the sky are all intensely cold, delicate, hot, comfortable. Our sun is a satellite, planet, star, fragment of the earth. In the 7 ages of man, sign like furnace is used for soldier, the lover, the justice, the schoolboy. Pause करें वीडियो को और अपने आंसर्स को लिख लें। According to Einstein, the sound sense of nations has been corrupted by schools and the press. The doctor went towards the miller's house in the horse carriage. वैसे horse पे गया था वो, horse back पे, horse carriage नहीं था, लेकिन इस वक्त यही सही आंसर है तो इसको मार्क कर देता हूँ। Catherine suggested to her father that he must land in England, London. अच्छा पहले तो ये सुन लें कि ये जो आप लोगों ने चैप्टर शायद पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, वो है स्पेसशिप 1। स्पेसशिप 1 जो कि जॉन हैम्पटन ने लिखा है, टेक्स्ट 8 है, ये हमारे बुक का चैप्टर नंबर 8 है, ये उससे लिया गया है। और कैथरीन जो है वो अपने फादर को सजेस्ट करती हैं, वो लोग इंग्लैंड में लैंड करने वाले होते हैं, तो उनसे कहती है कि आप इंग्लैंड में लैंड ना करें बल्कि कनाडा या अमेरिका चले जाएं। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज कनाडा। और अगेन स्पेसशिप 1 से जो है ये एमसीक्यू लिया गया है। The sun and the other stars we see in the sky are all intensely hot. ये वाला एमसीक्यू और our sun is a satellite, ये वाला एमसीक्यू, ये दोनों ही क्या है,
ये दोनों हमारे पास एन एस्ट्रोनॉमर्स व्यू ऑफ द यूनिवर्स जो कि चैप्टर नंबर 9 है उससे लिया गया है, ये वहां से दिया हुआ है. In the 7 ages of man, sign like fairness is used for the lover. Hopefully के सारे MCQs आप कर चुके होंगे. अगर आप ये चाहते हैं कि पोइट्री के सारे जो MCQs हैं तमाम तर पोएम्स के along with the past papers आप उसे सुन सकें, प्रैक्टिस कर सकें, देख सकें, तो उसके लिए आपके स्क्रीन की टॉप राइट पे जो इस वक्त आई बटन शो हो रहा है आप उसे क्लिक करके उसको सुन सकते हैं, देख सकते हैं. The man of life upright regards the life in this world as a place of fun, a stage, pilgrimage. The wife of Samson was Catherine, Mona. Delilah, Mary. An elegy is a poem of flattery, romance, mourning, delight. A literary piece is regarded as John Keats' masterpiece. An essay man, Ulysses, Endymion, Samson. In the poem, Say Not the Struggle, Not to Will It, the poet gives examples of flood and smoke, violets and roses, sunrise and smoke, sea and battlefield. Sounding froze means speedy waves, noiseless waves, noisy waves, high waves. पॉज कर लें वीडियो को, अपने आंसर्स को पहले लिख लें और उसके बाद वीडियो को रिज्यूम करके अपने आंसर्स को चेक कर लें. The man of life upright regards the life in this world as a pilgrimage. The wife of Samson was Delilah. An elegy is a poem of mourning. A literary piece is regarded as John Keats' masterpiece, that is Endymion. In the poem Say Not the Struggle, Not to Will It, the poet gives the example of sea and battlefield. Sounding froze means noisy waves. ये poem Ulysses से जो है लिया गया है. चलते हैं फर्दर MCQs की तरफ. अब हमारे पास सिर्फ रही दो गए पीछे, उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच को. Wordsworth saw a girl in the solitary reaper addressing people, reaping crop in the field, cooking food alone, reaping and singing in a field. But there began the infinitude of God with its endless immensity in the mirror of sovereignty, divinity और eternity, reality. आपने करना ये है कि आपने इसको पॉज करके अपने आंसर्स लिख लेने हैं, उसके बाद फिर अपने आंसर्स चेक कर लेने हैं. Wordsworth saw a girl in the solitary reaper, reaping and singing in the field. But there began the infinitude of God with its endless immensity in the mirror of eternity. So these were the answers of all the MCQs. Hopefully के आपको जो है काफी अच्छी प्रैक्टिस मिल चुकी होगी. चलते हैं इनके सेक्शन बी की तरफ. देखें प्रोज में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं. प्रोज में पहला क्वेश्चन है, इज मैन clever? Then Mrs. Cantup discussed how long did the panic last and how was order restored. ये उसका है, the day the dam broke up. Why did the magistrate discharge Mrs. Jones from trial in Act 3 of the silver box? होना चाहिए था ये. Why is the origin of life still a riddle to the scientist? उसके बाद है, what is the theme of the poem Say Not the Struggle, Not to Will It? What does Shelley want to say in his poem Music When Soft Voices Die? How did Samson destroy his enemies in the poem Samson Agonistes? What are the different shapes of beauties that give joy according to John Keats? अच्छा, ये जो नॉवेल है, नॉवेल में जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो जरा देख लें वो क्या है. उसके अंदर जो है वो पूछ रहा है कि गिव अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द लॉयल्टी एंड विजडम ऑफ कर्नल सैप. Who was the prisoner of Zenda and why was he imprisoned? ये बादशाह के बारे में बात चल रही. Give a comparison between Alberg and Rassendyll. Briefly narrate the tea table incident. Excuse me. अच्छा देखिए, प्रो सेक्शन का जो चौथा क्वेश्चन है, why is the origin of life still a riddle to the scientist? ये जो है हमारे चैप्टर एन एस्ट्रोनॉमर्स व्यू ऑफ द यूनिवर्स से लिया गया है, जो कि चैप्टर नंबर 9 है हमारी बुक का, और इसे लिखा है जेम्स जीन्स ने. ये चैप्टर अमूमन नहीं पढ़ाए जाते, लेकिन गवर्नमेंट टीचर्स जो हैं वो बार बार इन चैप्टर्स से क्वेश्चंस बना रहे हैं, एमसीक्यूज बना रहे हैं, खासकर एमसीक्यूज बना रहे हैं चैप्टर नंबर 9 से, चैप्टर नंबर 8 से, स्पेसशिप और एस्ट्रोनॉमर्स व्यू ऑफ लाइफ ऑफ द यूनिवर्स से. तो देख लीजिए कैसे. बहरहाल चलते हैं हम आगे.
अच्छा देखिए, उसके बाद हमारे पास जो सबसेक्शन 4 है उसके अंदर हम सिर्फ डिस्कस करेंगे कॉलम मैचिंग को। देखिए मैंने बार बार ये बात समझाई है और दोबारा ये बात समझा रहा हूँ कि कॉलम मैचिंग में आपने ये करना है कि आपने लाइन को जो है आपस में क्रॉस कर करके जो है आपने मैच नहीं करवाना कॉलम्स को, बल्कि कॉलम ए जो है वो एज इट इज आप कॉपी करेंगे जैसे पेपर में लिखा होगा, और कॉलम बी में आप करेक्ट आंसर्स को लिखेंगे वर्ड्स के आगे या फ्रेजेस के आगे, ठीक है ना। जैसे पैनिक के आगे क्या होना चाहिए था, फेयर होना चाहिए था। चार वुमेन के आगे क्या होना चाहिए था, मेड सर्वेंट होना चाहिए था।